Assalamualaikum students, this is Dr. Sayyed Shahzad Anatomy, and today our topic is the growth and development, which is the last topic of the anatomy subject. So today we will discuss the growth and development of the human and आज जो हमने पूरा इसमें डिस्कस करना है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक इंसान की ग्रोथ डेवलपमेंट बचपन से लेके फ्रॉम दी मदर तो वहाँ से लेके उसके बुढ़ापे तक कैसी उसकी ग्रोथ होती है, कैसी उसकी डेवलपमेंट होती है, एंड विच थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए हदीस मुबारक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे अमाल ना बताऊं जिनसे अल्लाह ताला गुनाह मिटाते और दर्जात को बुलंद करते हैं. तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह. तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नागवारी के बावजूद कामिल वुज़ू करना, मसाजिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर जाना और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, बस ये सरहद पर पहरा देने की तरह है. तो सरहद के पहरे के मुताबिक उन्होंने ये छोटे छोटे आपको अब काम बताए, ना कि आपको बताया सिर्फ वुज़ू करना, छोटे छोटे कदम लेना मस्जिद की तरफ और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना. आपको क्या कहा है कि ये सरहद पर पहरा देने की तरह है. चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज दैट टेक प्लेस बर्थ एंड मैच्योरिटी. जैसे बच्चा पहले छोटा होता है, उसके बाद फिर 5 मंथ का होता है, फिर 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ में फिर वो क्या होता है, वो जो होता है दुनिया में आने के लिए तैयार होता है. सो human growth is far being a simple and uniform process of being taller and larger. So as a child get bigger, they are changed in shape and tissue composition and distribution. So in newborn infant, the head represent about the quarter of the total length, and the adult and represent to about the 1/7 in newborn infant, and muscle constitute a much smaller percentage to the total body mass than in the young adult. So in most tissues, growth consists both of the formation of new cells and packing in the more protein or other material into the cell already present, with development of cell division and later cell filling. So types and rate of human growth, different tissues and different region of the body mature at the birth rates, and the growth of development of the child consists of the highly complex series of changes. So it is likely the weaving of cloth was pattern never repeats itself, and in lying threads, each coming off the reel and on rhythm, interact with the another continuously, and the manner always highly regulated and controlled. So height is the most circumstances, the best signal index of the growth, being a measure of single tissues. That of the skeletal weight is the mixture of all tissues, and this makes it less useful parameter in long-term following of the child growth. So in this section, the height curves of girls and boys is considered the 3 chief phases of the growth. That is probably the conceptions, puberty, and lymphatic tissues, which is the fat tissues. So the general velocity curve of the growth is height begins a considerable time before birth, and the peak velocity of length is reached at about 4 months after the mother last menstruations and the fetal period. Usually note from the first day of the last menstrual period, the average of 2 weeks before the actual fertilization, but the rules is only the locatable landmark. So there is a inconsiderable evidence that the about 34 to 36 weeks onward, the rate of growth of fetus slowly down, and because influence of the maternal uterus, and the weight gain is the 36 of the weight. So poor environmental circumstances, nutrition results a lower birth weight in the human being. This seems to cheaply because the reduced rate of the growth in the last 2 to 4 weeks of the fetal life for the weight of the babies born in 36 to 38 weeks of the world in various circumstances. So during adolescence, spurs in height for the year and more, the velocity of the growth approximately double, and the boy is likely to be growing again, and the rate of loss experience about the age of the peak velocity of the height is the point each used in the growth studies, average about 10.5 centimeter per year in boys and 9.0 centimeter in girls, which is important for the MCQs perspective.
سو دس از آور ٹاپک اینڈ دس از اناٹمی. سو آج جو اناٹمی کا ٹاپک ختم ہو گئے. آپ کے یہاں پہ اناٹمی کے سارے لیکچرس یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. سو یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ایم سی کیوز میں آپ کو بتاتا کہ یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, تو وہ چیزیں آپ کائنڈلی دیکھ لیں اور وہ ٹاپک بھی آپ امپورٹنٹلی دیکھ لیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.